another vision out there as well, a darker vision. It is a vision which says that we must give up on democracy, that we are too stupid and inept to govern ourselves, and that we must put more and more power into the hands of one man. It is a vision that says we should accept an economy in which a handful of oligarchs have unbelievable wealth, while the vast majority of our people struggle to put food on the table. It is a vision that says that the only thing that matters in life is the accumulation of money and power. And that it is okay if we lie, cheat, and steal to achieve those goals. It is a vision which says that we must hate each other because of where we were born. Hate each other because of a different language that someone speaks. Hate each other because of the differences in the color of our skin, or our religion, or our sexual orientation. It is a vision that foments hatred and hatred and hatred, division, division, and division. It is an Orwellian vision which says that we must live in a constant state of fear, that we must always have an enemy, and that we must always be at war. It is a vision which says that we have unlimited amounts of money for bombs and guns and killing, but never enough money to feed our children, provide affordable housing, or enable our parents to retire with dignity. Today, here in Minnesota, in Vermont, and in every state in the country, we say loudly and proudly that as Americans, we will never forsake our heritage. We will never accept authoritarianism. We will never accept oligarchy. And we will never accept a president who is a pathological liar, a kleptocrat, and a narcissist who is undermining the Constitution of the United States and the rule of law every day. We will never accept government policy that gives massive tax breaks to billionaires, throws 15 million Americans off the health care they have, breaks unions, denies women the right to control their own bodies, and is pushing the planet closer and closer to a climate crisis. In the last year, I must confess, I've been thinking a lot about American history, about the men and women in 1776 who, with unbelievable courage, announced to the world that they would no longer be ruled by the King of England, who had absolute power over their lives. These patriots demanded freedom, and they fought a bloody revolutionary war
against the most powerful military in the world to achieve that freedom. And they won. And after their military victory, they established the first democratic form of government in modern history. In 1789, they said loudly and boldly to the entire world, here in this new nation of America, we don't want kings. चाय मिले तो हो जाए प्यार, चाय तो है दिल का इजहार, आए खिज़ां या हो बाहर, चाय बने जो बैठे जा, तुम हो मैं हूँ और एक कप और मिले एक और कप तो है बेड़ा पार। चाय बने बस दानेदार, चाय बने बस दानेदार, चाय बने बस दानेदार, चाय बने बस दानेदार, दानेदार, चाय बने बस दानेदार। More kings. We will not allow this country to descend into authoritarianism or oligarchy. In America, we the people will rule. But let us be clear. This moment is not just about one man's greed, one man's corruption, or one man's contempt for our Constitution. This is about a handful of the wealthiest people on earth who, in their insatiable greed, have taken over our economy, have taken over our political system, have taken over our media in order to enrich themselves at the expense of the working families of our country. Brothers and sisters, never before in American history have so few had so much wealth and so much power. Never before in American history has there been such extreme levels of income and wealth inequality, with the top 1% now owning, if you can believe it, more wealth than the bottom 93%. Never before in American history had we seen the super rich expand their wealth so rapidly. Last year alone, after receiving the largest tax break in history, 938 billionaires in America, fewer than 1,000 people, became $1.5 trillion richer. And our president, honest Donald Trump, became over $1 billion richer himself. Never before in American history have we seen a ruling class within a corrupt campaign finance system spend so much money to buy politicians. In the coming midterm elections, the billionaires will spend many hundreds of millions of dollars to make sure that government continues to work for them and not working families. Meanwhile, while the richest people in America become much richer, 60% of our people here in Minnesota, in Vermont, and all over this country are living paycheck to paycheck, struggling to put food on the table,
struggling to pay their rent and their mortgage, struggling to pay for child care and education, and struggling to put a few bucks aside for a decent retirement. In America today, tens of thousands of our people die every year unnecessarily because they cannot afford to go to a doctor. And unless we change how our economy works, our younger generation, our kids, for the first time in modern history, will have a lower standard of living than their parents. So today, we not only say no to Trump's authoritarianism, we say no to Mr. Musk, no to Mr. Bezos, and Mr. Zuckerberg, and Mr. Ellison, and all the other multi-billionaires. You cannot have it all. We will create an economy that works for all Americans, not just the 1%. Brothers and sisters, it is not just the authoritarianism of the Trump administration that we must combat. It is not just the oligarchs and their insatiable greed that we must combat. Now, as the news literally of today reminds us, we have got to stop the out-of-control militarism of the Trump administration, whether it is here at home in cities like Minneapolis and St. Paul or abroad. Let us be honest. The American people were lied to about the war in Vietnam. We were lied to about the war in Iraq. And we are being lied to today about the war in Iran. This war must end immediately. In the last election, Donald Trump pointed out correctly the huge amounts of money that had been wasted in wars that should have been spent rebuilding America. He campaigned as a peace candidate, and he promised no more forever wars. He lied. 1 month ago, Trump and his partner, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, started a war with Iran. This war is unconstitutional. Trump did not seek or receive authorization from Congress. This war is a violation of international law. One sovereign nation cannot simply go about attacking another sovereign nation for any reason it chooses. Since this war began, 13 American soldiers have been killed and hundreds have been wounded, including another 12 yesterday. In Iran, nearly 2,000 civilians have been killed and many more wounded, and 498 schools have been bombed by American and Israeli missiles. In Lebanon, more than 1,000 people are dead, and more than 1 million Lebanese people, 15% of their population, have been displaced from their homes.
In Israel, 20 people have been killed and over 5,000 wounded. In the West Bank, Israeli vigilantes are burning down homes and killing Palestinians. At a time when gas prices are soaring, when many Americans cannot afford the basic necessities of life, it is estimated that this war has already cost $1 trillion. At a time when the American people are politically divided, there is one issue that is bringing us together. Conservatives, moderates, and progressives are speaking out in unison: end this war. And as a U.S. Senator, I want to just mention to you about what I intend to do about it. First, we have got to make sure that Congress does not send another $200 billion to fight this war. Trump's supplemental appropriation for the war in Iran must be defeated. Secondly, I will be forcing a vote in the Senate on legislation to block the sale of nearly $1 billion in weapons to the Israeli military for bombs and bulldozers. A nation, a government that has committed genocide in Gaza does not need more military support from American taxpayers. My fellow Americans, we are all proud to live in a country which throughout our history has inspired people throughout the world to struggle for freedom, for democracy, and justice. And we understand that when we stand together and not let demagogues divide us up, we can continue to inspire the world to believe in a brighter future. Yes, we can create a vibrant democracy by ending Citizens United and not allow billionaires to buy elections. Yes, we can create an economy that works for every man, woman, and child in our country, and not just a handful of billionaires. Yes, we can make certain that the revolutionary technologies of artificial intelligence and robotics are used to improve life for all of us and not just make the rich owners of that technology even richer. Yes, we can and must join the rest of the industrialized world and guarantee health care as a human right for all of our people. Yes, instead of spending $1 trillion a year on the military, we can wipe out homelessness and build millions of units of low-income and affordable housing. Yes, in the richest country on earth, we can have the best public educational system in the world, tuition-free from child care to graduate school.
Yes, we can expand Social Security and radically improve our pension system so that every senior in America can retire with dignity. Yes, we can raise the minimum wage to a living wage and guarantee every worker the right to join a union. Yes, we can guarantee that every woman in this country has the right to control her own body. And yes, when billionaires are paying an effective tax rate lower than a truck driver or a nurse, we can and must make certain that the top 1% and large profitable corporations start paying their fair share of taxes. My fellow Americans, the establishment, including the corporate media and many of my colleagues in Congress, want you to believe that you are powerless. They want you to believe that you cannot change the status quo, that because of their wealth and their influence, there is nothing you can do to combat them. But that is a lie. Throughout the history of our country, when Americans have stood up and fought for justice, they have prevailed. The founders of our country did it when they stood up to King George. The abolitionists did it when they ended slavery. The working class did it when they stood up to their bosses and formed unions. The suffragettes did it when they demanded that women have the right to vote. The LGBT community did it when they demanded basic human rights. Time and time again, in difficult moments in American history, our people stood up, fought back, and won. They did it then, we can and will do it now. Today, March 28th, 2026, millions of Americans are out on the street demanding freedom, democracy, and justice. But we must make certain today is not the end of our struggle, it is the beginning. Together, when we stand united, we can and will create the kind of nation that you and I know that we can become. Thank you all very much. And now, please welcome to the stage, Congresswoman Ilhan Omar. ब्रेक की बेल बजने से पहले भूख की बेल बज जाती है जितना भी कंट्रोल करूं मैं भूख लगती जाती है इसीलिए नेस्ले बुनियाद लाया नया पीने वाला दलिया जिसमें है गंदम और आयरन की दोहरी ग़िज़ाइयत। बस पानी में घोलो और पी लो, पेट भरेगा तो आगे बढ़ेगा। From Nestle. As you show the country just how courageous and dedicated and resistant we are. In the United States of America, we pledge allegiance to the Constitution and the flag, not to a person or a king. I came to this country as a refugee. To me, America was a beacon of hope. A place where freedom wasn't just a word, but it was a promise. I arrived here when I was 12 years old.
I could have never imagined the day would come when we were staring down at this kind of creeping authoritarianism in the United States of America. But we are here because Donald Trump just has not chipped away at our democracy. He has taken a wrecking ball to the very foundation of what makes America great. He has tried to intimidate Minnesotans. He has tried to make us afraid. He has tried to divide us. But we stood strong. We have had each other's back, and we have never bent the knee. Because in Minnesota, we are built different. We do not cower to bullies. We are Minnesota strong. What we are seeing right now is bigger than what is happening here. Operation Metro Surge was just the tip of the iceberg. We are witnessing a full-scale assault on our rights, our institutions, and the rule of law. We have an administration that is openly and brazenly breaking the law and is acting like the Constitution is optional. And while they are doing that, they are shamefully and blatantly lying about every single thing they are doing. There were hundreds of millions of dollars in oil futures traded just minutes before a sudden reversal in U.S. policy towards Iran. This is not a coincidence, it is corruption. At DHS, we got a reckless spending spree, planes, vanity projects. It's like a billionaire's midlife crisis, except the American people are paying for it. While the Pentagon keeps failing its audits year after year, somehow they are able to find the budget for steak and lobster. And we know that what Trump calls strength is his idea of liberating women in Iran is to bomb and murder school children. They are pushing for the SAFE Act to disenfranchise millions of voters because they know they are not going to win a fair election. They are floating an illegal takeover of places like Cuba and Greenland like it is some kind of a real estate deal. And under the so-called anti-war president, we have now seen the launching of military operations in Iran, in Venezuela, and in Ecuador. Just a couple of weeks ago, they told us that they blew up a drug trafficking camp in Ecuador, and it turned out to be a dairy farm. A dairy farm. This is what incompetency and unchecked power looks like. It is reckless, it is dangerous, and this is not what our country will stand for. But I still have hope. I have hope in every one of you that is here today. I have hope in people across this country. We are going to speak up. We are going to continue to show up because we refuse to believe in a future ruled by fear, corruption, and chaos. We are not a country of kings. We are a country of laws. We are a country where people look out for one another. And we are a country that will fight peacefully, powerfully, and persistently to protect our democracy. I love you, Minnesotans. Thank you so much for being out here. And now it is my honor. It is my honor to introduce a lifelong hero of mine, the incredible, brave,
courageous Jane Fonda. Hi, everybody. Hi. I'm not going to make a speech because we're running late and there's a bunch of people who have to catch planes. Let me just say thank you, thank you, thank you, Minnesota. Thank you, all the unions. Thank you all. क्या हम यहाँ हारने आए हैं? तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे ऐसे क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स जिसके ऐसे ऐसे शुरू है मैक्स क्रंच, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, the ultimate potato chip experience। खवातीन ऐसा क्या काम है जो हमसे अच्छा, मर्दों से अच्छा कर? सर लंडे में अच्छा सूट तलाश करना। हाँ, ये अच्छी बात है, वहाँ से निकाल लेती हैं, उनको पता होता है क्या निकालना है। जी बेहतरी सूट। आपका कभी खवातीन ने आपको लंडे से कपड़े निकाल के दिए? सर देखा बहुत दफा। देखा? आप तो आप क्या कर रहे होते लंडे में? मैं सोच रहा हूँ कहाँ से निकालूं। आप ये सिर्फ सोच ही रहे होते मैं कहाँ से निकालूं? लेकिन वो अच्छी निकाल लेती हैं। बच्चे आपको कभी निकाल के दिए किसी खातून ने? नहीं। कभी आपको ऐसा तो नहीं हुआ लंडे में आप गए हो आपको निकाल दिया हो खवातीन ने, यार ये अच्छा आइटम आया? गायब कहाँ थे आप? आज बड़े अरसे बाद हाथ आए। मैं इधर भी पैसा इस्तेमाल हुआ है। मैंने तो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। मैंने जो कुछ भी किया उसकी वैलिडेशन हुई थी इसी सुप्रीम कोर्ट से। सिर्फ 2% वोट सही निकले हैं, 98% का कुछ पता नहीं किधर है। कुछ बातों का आप भी जवाब दें ना। मौलाना आपसे मैं अपील करता हूँ, एक जिरगा हम बुलाएं। ये मुल्क की सलामती का मामला है। हिस्सों की अफगानिस्तान खावरा तशाफुज़ शिकार हो गए। Economic corridor, one belt, one road. أشكر لكم أخي سليم. Did the American won this war? The policy didn't work। देखिए जिरगा हफ्ता और इतवार शब 10:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। देखिए एक दिन जियो के साथ इतवार शब 7:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। किस्मत
सदर ज़ेलेंस्की की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से भी मुलाकात। युगेंडा के आर्मी चीफ ने ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने की पेशकश कर दी। कहा युगेंडा की अफवाज इसराइल की जानिब से लड़ने के लिए तैयार हैं। युगेंडा की फौज में 45,000 फौजी हैं। खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बायस RLNG की दरामद बंद। मुल्क में गैस बहरान बढ़ने लगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस प्रेशर में कमी। सुई नॉर्दर्न के जराये के मुताबिक सिस्टम में LNG की किल्लत बढ़ गई है। यौमिया शॉर्टफॉल 700 मिलियन क्यूबिक फीट तक जा पहुंचा है। घरेलू सार्फिन को गैस की किल्लत का शदीद सामना करना पड़ रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नाश्ते और खाने के औकात में भी गैस प्रेशर इंतहाई कम रहने लगा। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक सनतों को गैस की फराहमी जारी है। पाकिस्तान की ईरान को चावल, समंदरी खुराक, फार्मास्यूटिकल मसनूआत समेत मुतादिद अशिया बरामद की इजाज़त। ज़मीन के रास्ते बरामदात के लिए बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट की शर्त पर आयद आर्जी इस्तिस्ना भी दे दिया गया। वजारत तजारत के मुताबिक ज़मीनी रास्ते के जरिए ईरान, अज़रबैजान और वस्ती एशियाई ममालिक को बरामदात की इजाज़त दी गई है। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा कि 3 माह के लिए खुसूसी रियायत 24 मार्च से 21 जून तक नाफिजुल अमल होगी। ईरान के रास्ते तजारत से बरामद करनेदगान के अखराजात और वक्त में नुमायां कमी आएगी। अपर कुरम में कच्चे रास्तों पर नस्ब बारूदी सुरंगों के 3 धमाके, 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। इंतजामिया का कहना है कि पाराचनार पेशावर मेन शाहरा की बंदिश से मकामी अफराद कच्चे रास्तों पर सफर करते हैं। शाहरा खोलने और बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए इक़दाम जारी हैं। इसराइली फौजियों ने मगरबी किनारे में अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN की टीम को हिरासत में ले लिया। CNN की टीम इसराइली काबज़ीन की जानिब से फ़लस्तीनियों की बस्ती गाँव में ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जे के बाद कवरेज में मसरूफ़ थी। सहाफ़ियों के मुताबिक इसराइली फौजियों ने उन पर तशद्दुद किया और एक अमरीकी न्यूज़ चैनल के फ़ोटो जर्नलिस्ट का गला दबाया और उसका कैमरा तोड़ दिया। ज़ेरे हिरासत सहाफ़ियों को 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया। वाक़े पर आलमी सहाफ़ती तंजीमों का इजहार तशवीश, फ़ॉरेन प्रेस एसोसिएशन का इजहार मज़म्मत, वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। रैपर से वजारत उज़्मा तक का सफर। नेपाल में बदउनवानी के खिलाफ नौजवानों की क़यादत में होने वाले मुजाहिरों के बाद इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले 35 साला बलंदर शाह मुल्क के नए वज़ीर आज़म बन गए। उनकी जमात ने पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत हासिल की, जिसके बाद वो दुनिया के कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म में शामिल हो गए। This one's even bigger. Oh, sound of the bat. Once again, the ball will... Oh, big hit. Oh, and that is a great shot. And there it is, emphatic, smashed through the covers. And the Sultans have started their campaign with a very, very good run chase here. HBL-PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेट से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 171 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स ने हदफ 8 गेंदों कबल हासिल कर लिया। इससे कबल खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने रावलपिंडीज को 2 विकेट से शिकस्त दी। ज़ल्मी ने 215 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए गए।
ईरान की फुटबॉल टीम का नाइजीरिया के खिलाफ दोस्ताना मैच के आगाज से कबल बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर और हाथों में स्कूल बैग थाम कर मीनाब के स्कूल पर अमरीकी हमले में तालिबात की शहादत के खिलाफ एहतजाज। गुज़श्ता माह स्कूल पर हमले में 110 तालिबात समेत 168 अफराद शहीद हो गए थे। तुर्की के शहर अनतालिया में होने वाले वार्म अप मैच में नाइजीरिया ने ईरान को 2-1 से हरा दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्ध हार मनाया गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में रात 8:30 से 9:30 बजे तक तमाम गैर ज़रूरी रोशनियां बंद रहीं। करतारपुर दरबार बाबा गुरु नानक में भी रोशनियां बंद की गईं। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अर्ध हार का मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तवानाई के मौसर इस्तेमाल और मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ आगाही पैदा करना है। साकिनाने शहर कायद के ज़ेरे एहतमाम कराची के एक्सपो सेंटर में 31वां आलमी मुशायरा। अंदरून और बैरून मुल्क से आए उर्दू के मारूफ शोरा की शिरकत। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुशायरे को आलमी मुशायरा बराए अमन आलम का उन्वान दिया गया। New Peak Feet Smile Triple Chocolate Donut। अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी और अब पाकिस्तान में नाजरीन देख सकेंगे। प्रोग्राम जरगा और जियो इंटरनेशनल के नाजरीन के लिए खबरों का सिलसिला जारी है। This program is brought to you in association with Ufone and Zong। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हैरत होती है कि अमेरिका जैसे आली दिमागों के हामिल मुल्क में डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स सदर बन गए। सुबह शाम मुतज़ाद और गैर संजीदा बयानात की वजह से उनका मस्खरा फ़र्क पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। उनके बयानात और वादों को अब कोई संजीदा नहीं लेता। बदकिस्मती से उनकी हरकतें सिर्फ ज़ुबानी बयानात तक महदूद नहीं हैं, बल्कि अमलन भी वो नताइज की परवाह किए बगैर ऐसे इक़दामात उठाते हैं जिसकी वजह से उनका मस्खरापन नुमायाँ होता है। अमेरिका के अंदर वो जिस कदर चीज़ों को उलट पुलट कर सकते थे वो कर दिया और अब बदकिस्मती से बैरूनी दुनिया की तरफ मुतवज्जे हो गए हैं। वो अमन के नोबल प्राइज़ के मुतमन्नी थे, लेकिन बाहर मुतवज्जे होते ही उलट सिमत में जा निकले। आगाज़ वेनेज़ुएला से किया और उसके सदर को अगवा करके न्यूयॉर्क ले आए, फिर नए महाज की तलाश में लग गए। तो अपने आप को अक्ल समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपने दाम में घेर लिया। उन्हें ये पट्टी पढ़ाई कि ईरान लटक रहा है और हमारे एक हमले से ही हमारी जोली में आ गिरेगा। चुनांचे वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर ऐसे आलम में हमलावर हुए कि उसके साथ सालिसी करने वाले ओमान के वज़ीर के मुताबिक मुज़ाकरात कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे थे। अकल से आरी सुपर पावर के इस सरबराह ने कुछ अर्सा कबल ईरान में होने वाले मुज़ाहरों के तनाजुर में ये ख्वाब देखा